Hello students, in previous video we have discussed about Monera kingdom. Now we will be discussing about Protista. It includes single-celled eukaryotes. For example, chrysophytes, dinoflagellate, euglenoids, slime mold, protozoans. First we see what are chrysophytes. देखिए यहाँ पे एक स्पेशल फीचर है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. यूनि मीन्स सिंगल, यूकैरियोट्स मीन्स अ सेल which having well developed nucleus in which DNA is present or chromosome present and cell bounded organelles. Cell bounded means mitochondria, Golgi body, they are covered with a membrane, that is called cell bounded organelles. This cell is called eukaryote. Eu means true, karyote means nucleus. A cell which having true nucleus, that is called eukaryotic cell. In Protista, unicellular eukaryotes organism are placed in. First we see what are chrysophytes. It includes diatoms and golden algae. What are diatoms? They are fresh water as well as marine water animal. They live in fresh water as well as marine water. Both are photosynthetic. It means they have pigment and they can make their food. So we can say they are autotrophic. Autotrophic or photosynthetic. They can trap light energy with the help of pigments. Diatoms जो हैं, इनकी जो सेल वॉल है, it form two thin overlapping shell like this. Cell wall is made up of silica plus polysaccharide. अब सिलिका इसकी जो सेल वॉल में स्पेशल एक एलिमेंट आ गया है. सिलिका क्या है कि जब ये डायटम्स की डेथ होती है यानी डायटम्स डिकम्पोज होते हैं तो सिलिका जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता. सिलिका क्या होता है, जो सी वाटर में सरफेस है वहाँ पर ये मिक्स हो जाता है, वहाँ की सरफेस पर सिलिका क्या है, एक्यूमुलेट हो जाता है. तो इस सॉइल को जिसमें ये सिलिका मिक्स है इसका यूज़ करते हैं पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में, सीरप्स में मेनली. और इस इनका यूज़ लिख लेते हैं कि सिलिका का यूज़ क्या क्या होता है, पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सीरप. अब यहाँ पर जो पॉलिश है यानी वार्निश भी जो होती है, जो पेंट करते हैं उनमें भी क्या मिक्स होता है, सिलिका. तो यहाँ पर ये आपको दिख रही है जो इनकी सेल वॉल होती है वो इस तरह से लग रही है जैसे सोप बॉक्स. तो इनका नेम जो है डाई एटम्स, बिकॉज सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लाइक टू शेल्स. ऐसे लग रहा है जैसे टू शेल्स हैं तो इसलिए इन्हें कहते हैं डाई एटम्स. कलर कैसा होता है इनका, दे लुक ग्रीन, ब्राउन, येलो कलर. और मेनली दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑन द अर्थ. चीफ प्रोड्यूसर्स मीन्स कि 90% जो फोटोसिंथेसिस है अर्थ पर वो कौन करते हैं, डायटम्स. ठीक है. अब गोल्डन एल्गी क्या है, गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स, इन्हें प्लैंक्टॉन्स भी कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स. दे एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. और इन्हें कौन जो स्मॉल फिशेस जो होती हैं वो इन्हें कंज्यूम करती हैं. जो डेस्मिड्स जो हैं इन्हें ये शाइन करते हैं सी में तो इन्हें ज्वेल्स ऑफ सी भी कहते हैं. दे लुक लाइक गोल्डन कलर, सो दे आर कॉल्ड गोल्डन एल्गी.
तो क्राइसोफाइट्स में इन 2 ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया है, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। अगर पिगमेंट की बात करें तो डायटम्स में जो पिगमेंट है वह है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, एंड मेनली जो येलो ग्रीन कलर आ रहा है वो आता है जैंथोफिल्स। ठीक है, और इनका फूड क्या है, दे स्टोर ऑयल इन द फॉर्म ऑफ फूड। यूजेस बता ही दिया कि सिलिका जो होता है वो पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, जेली, जैम, इनमें यूज होता है। नेक्स्ट इज डायनोफ्लेजलेट। ये मीनिंग क्या है डायनोफ्लेजलेट का, एन ऑर्गेनिज्म विच हैविंग 2 flagella, hair like structure. One is longitudinal and other is horizontal, and dino means 2, flagellate means 2 flagella present at their surface. One is longitudinal and other is horizontal. इनका कलर कैसा होता है, दे लुक येलो, ग्रीन, ब्लू और रेड, इस कलर के होते हैं। बिकॉज क्या है इनका रीज़न, पिगमेंट, कि जो मेन पिगमेंट होता है वो इनकी सेल में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। दे आर ऑल्सो ट्रॉफिक, autotrophic, because they have pigment chlorophyll A, chlorophyll D and xanthophylls. They show bioluminescence feature. Bioluminescence means they shine during night. For this feature they are called as fire algae. They have 2 flagella, one is longitudinal, other is ट्रांसवर्सली, यानी ये फरो में फिक्स है। फॉर दिस फीचर दे आर कॉल्ड डायनोफ्लेजिलेट। एग्जाम्पल्स ऑफ डायनोफ्लेजिलेट आर गोनियलक्स, गोनियलक्स जो है इट कॉजेज रेड टाइड्स बिकॉज दिस इज red dinoflagellate and they causes red tides. They release, dinoflagellate release a toxin which is responsible for death of small fishes, and where they found in marine water. Habitat क्या है इनका, marine water. Color रेड, येलो, ब्राउन, एंड फूड जो है दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, डायनोफ्लेजिलेट, बायोलुमिनेसेंस, गोनियलक्स। ये स्पेशल आपको टिप पर ये पॉइंट्स लर्न करने हैं। दे आर कॉल्ड फायर एल्गी एंड दिस इज रेड डायनोफ्लेजिलेट, इट कॉजेज red tides. Next we will talk about euglenoids. What are euglenoids? देखिए euglenoids, what are euglenoids? They are also unicellular eukaryotes. They live in fresh water. In this type of organism, cell wall absent. In place of cell wall, it has a lipoprotein membrane that is called pellicle, which makes its body flexible. It has 2 flagella, one is short, another is long. This is non-functional and this is functional. In presence of light, it acts as photosynthetic. It can make their food, but in absence of sunlight, it acts as heterotrophic. It engulfs एनिमल्स, यानी ये प्रीडेटिंग हो जाता है। जैसे एक एनिमल जो होता है वो प्रीडेटर की तरह एक्ट करता है, ऐसे यूग्लिना जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट की तरह
और एनिमल सनलाइट की एब्सेंस में एक एनिमल की तरह एक्ट करता है. सो इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल. Euglenoids are known as connecting link between plants and animal because it has dual nature. It acts as plants as well as animals. और इन्हें प्लांट से क्यों कंपेयर करते हैं? बिकॉज इट हैज़ अ यूनिवर्सल पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल ए विच इज प्रेजेंट इन इट. Example of euglenoids are euglena. It has a large nucleus, contractile vacuole. This is a pellicle. And this is flagellum. Example of euglenoids are euglena. Next are slime mold. Slime mold are false fungi. They are known as false fungi. They are unicellular eukaryote. First feature is they are saprophytic. Saprophytic means they consume dead matter. When slime mold aggregate, they form a plasmodium structure. They aggregate and form slime plasmodium structure. This plasmodium forms spore formation at the tip. This spore formation makes it resistant to adverse condition. चाहे कैसी भी condition हो, they can survive for many years because of this spore formation. They can survive for long period. They do not destroy easily. And how they reproduce? They reproduce through budding, multiple fission and spore formation. And these spores disperse through air current. Cell wall is absent and they store food in the form of glycogen. Example of slime mold are chlorella. Why they are called false fungi? Because these features match with fungi. Because but this is not fungi. Fungi is a multicellular eukaryotic cell, and this is unicellular eukaryotes. And they do not form a fungi-like structure, but some features match with fungi. So these are called false fungi. Example: chlorella, plasmodium. नेक्स्ट प्लाज्मोडियम से इंक्लूड नहीं करेंगे हम, ओनली क्लोरेला. स्लाइम मोड एग्जांपल क्लोरेला बिकॉज प्लाज्मोडियम नाउ प्लेस इन प्रोटोजोन्स. लास्ट इज प्रोटोजोन्स. व्हाट आर दीज? Protozoans are also unicellular eukaryotes. They are heterotrophic because they cannot make their food because absence of pigments. They are not photosynthetic. They depend on others. They act as parasitic or predator. Parasitic means some of protozoans live outside or upon the living host. And predator means some protozoans can engulf the organism like animals. They are considered as primitive animals. There are four major groups. First is amoeboid. In amoeboid, organisms live in fresh water, moist soil, sea water. Example: amoeba, ant amoeba. Amoeba has a pseudopodia. It has not fixed shape. It is a single cell structure. It has nucleus and large contractile. It captures its food with the help of pseudopodia. Pseudopodia means because this is not fixed arms, they capture their food with the help of pseudopodia. It's not fixed.
This is food. So on the basis of this feature they are categorized into predator. because predator क्या होता है कि engulf करना food को. तो अमीबा क्या है, फ्रेश वाटर में रहता है. और एंट अमीबा क्या है, एंट अमीबा लिव inside the alimentary canal of human and it causes amoebiasis disease. It causes amoebiasis disease. Next is second major group. Second major group of protozoan is flagellated protozoan. These organism has flagella. Cell wall is absent and cell membrane is made up of lipid and protein. They live in fresh water and they mainly act as parasitic. They are endoparasite. They live inside the host. For example, trypanosoma, it causes sleeping sickness in human. They have flagella because these are flagellated protozoans. These are free living और parasitic. ऐसा नहीं है कि all are parasitic. Some of flagellated protozoans are free living. Mainly they causes disease. Example is trypanosoma. It causes sleeping sickness. Cell wall is absent and cell membrane is made up of lipid and protein. Now third is ciliated protozoans. What are ciliated protozoans? They are free living aquatic animals, aquatic organism. They have 1,000 cilia. Cilia is hair-like structure. With the help of cilia, they move in the water and they have a large cavity which opens outside. Cell wall is absent and cell membrane is made up of lipid and protein. Because of 1,000 cilia, they are categorized into ciliated animals. Example is paramecium. Paramecium. Paramecium looks like a shoe-like structure, slipper-like structure. These organisms are free-living and parasite. They engulf food with the help of this cavity. And last is sporozoan. Okay, what are sporozoans? They are sporozoan protozoans. It includes those organisms which have spore stage in their life cycle. और वो कैसा होना चाहिए, सिंगल सेल भी हो और यूकैरियोटिक मीन्स membrane bound organelles. For example, plasmodium. Plasmodium has a spore-like structure in their life cycle. They reproduce by spore formation and they reproduce by multiple fission. Plasmodium is found as endoparasite and mode of nutrition is it is heterotrophic in nature. तब यहाँ देखेंगे कि ये जो थ्री जो हैं स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स, ये तो हेट्रोट्रॉफिक थे और क्राइसोफाइट और डाइनोफ्लेसलेट क्या है, ऑटोट्रॉफिक. और यूग्लिनॉइड जो है मिडिल में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट एक्ट एज ऑटोट्रॉफिक, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट इट एक्ट एज हेट्रोट्रॉफिक.
तो you have to remember protista group, chrysophyte, dinoflagellate, euglenoid, slime mold, protozoans. Again, chrysophytes, dinoflagellate, euglenoid, slime mold, protozoan. Protozoan has four major groups: amoeboid, flagellated protozoans, ciliated protozoans, sporozoan. Example of sporozoan is Plasmodium, ciliated Paramecium, flagellated Trypanosoma and amoeboid का क्या था? Amoeba and Entamoeba. Clear? So student, thank you very much.